Good afternoon, everyone. Today we have our 2 days training on how to automate using an accounting tool under CMP benefits. So today and tomorrow on the same timings, 3 to 5, we would be having our eminent speaker, CA Kunal Kumarji, will be taking this session for today and tomorrow as well. So now we have our chairman to the committee, CA Dr. Rohit Ruvatia ji. Sir, now you can give your welcome remarks to the members and share the initiatives of the CMP. Yes, sir. Thank you, Priyanshu ji. I'm thankful to Kunal ji, who is taking today's session on Zoho. And it is a great day for all of us because we have started a way of doing the capacity building for the members by doing small workshop where around 50 to 70 members will be participating. And it is another welcome step done by the committee for members in practice, where we will be doing regularly every week on different tools, which will be discussing on how to use these tools in our routine practice. So a lot of activities are being done. I'll not take much of the time today, but request everyone to be there. And whenever there is any discussion, my request to the office to kindly take the views of the participants also, because it is a one-to-one interaction. And if any member feel to discuss anything with the speaker, please allow them to discuss their issues so that it will be much helpful for them to practice these tools in their offices. So over to Priyanshu and over to Kunal. And of course, thank you the participants for coming to this particular workshop, which we will be doing regularly. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So participants, now we'll start with the session. Today, our eminent speakers who would be taking the training on how to automate your accounting using Zoho books. So today we have upon CA Kunal Kumarji. He specializes in accounting and taxation services for small and medium sized businesses. He's having 8 years of experience as a chartered accountant, and he's an expert in helping business streamline their accounting processes and adopt cloud-based solutions. So he's also a Zoho book certified trainer. So Kunalji, so I would request you to please take this session, and initially you can tell what all will be discussed today and tomorrow, so that the members can have the continuity of this training for today and tomorrow. Thank you, sir. Over to you. Thank you very much. Thank you very much, Committee for Member in Practice, for giving me this opportunity. And I would like to thank CA Rohit sir and CA Umesh Sharma ji for allowing me and giving me this opportunity to introduce members about this CMP benefit tool, that is Zoho Books, and how this can be benefit in their practice, and how they can use this tool to automate their accounting in their businesses and even for their client businesses. So let's start with this presentation. So I'm sharing my screen now. So I hope my screen is visible. You can see my screen now. So our today's session is automate accounting using Zoho Books, streamline accounting processes for efficiency. So first of all, in today's session, what we'll be learning will be we have 2 days session. So we have agenda for today as well as for tomorrow. So in today's agenda, in today's session, what we'll be learning what is Zoho Books. I'll introduce you with the Zoho Books and its platform, its dashboard. So we'll get little idea, little foundation about this Zoho Books, and then we'll see how we can set up a new organization for our business or even for our client business in Zoho Books. Then we'll be learning how to post the opening balances if you are migrating from any other accounting software, that may be Tally, PZ, or maybe any other accounting software. Then how you can migrate your data or put your opening balances in Zoho Books. And then later we'll be discussing day-to-day transactions, how we handle in Zoho Books. And after that, in last 10-15 minutes, we'll keep a session for your question and answers, and we'll be discussing all the questions of the members. So this is the agenda for today. And tomorrow we'll be discussing how to use connected banking
how to file GST returns with Zoho books like GSTR1, GSTR3B, annual GST return, how to reconcile data, and how to manage TDS in Zoho books, manual journal entry, and reports. So this is two-day agenda. So I request members to attend this session and tomorrow's session so that they can take full advantage of this webinar. So let's start. First of all, this session is about automate your accounting. So why to automate your accounting? Why it is important in today's era? So we are in 2024 and we can see there are a lot of news about artificial intelligence, chat GPT, all these things. So why it is important to automate your accounting? You know, if we talk about manual accounting, so we get a lot of time consuming task over there. We put each and every entry. It is also prone to an error and lack of real-time insight. When I talk to my clients or even other chartered accountant friends, the main reason they see Zoho Books as a automation tool is a financial visibility. When you talk about Tele or any other accounting software, so as a business owner, it is not very easy for a business owner to check their tally data, because as a chartered accountant or accountant it's easy for us because we have that much technical knowledge, but business owner, they don't have any that much technical knowledge as chartered accountant have. So if we want to have real time insight, real time our dashboard, what our sales is for the month, what is our sales by a product, or what is our sales from different geography, so this can be very helpful. So this is the main challenge what we face in a traditional accounting system, or you can say manual accounting system. For that, we need to prepare separate MIS reports, separate. We just get data from Tele and then we prepare separate MIS report. So that is more time consuming. Now, business owner or you need a tool where you just click on a button and you get reports which you require. So this is the benefit of automation. You can save your time, you can reduce your errors, and this will also help in improving your decision making. Automation allow better resource allocation and focus on strategic tasks, enable business to adapt to changing regulatory requirement more efficiently, and increase our productivity and competitiveness in the market. So this is the time, this is the era when everyone would like to do automations, for in every part of our life, even in you can say accounting, even in marketing, even in every part of our life we are looking for automations. So this is the thing. So how accounting can be ignored from this? So we also want automation in accounting. So now let's talk about Zoho Books. What is Zoho Books? Zoho Books is a cloud-based accounting software which is designed for businesses of all size. Earlier, we have desktop-based accounting software which we install on our computer, and then we have, in earlier time, we used to have a CD which we install in our computer, and then we were able to access our accounting software. But now, what you can do, this is a cloud-based accounting software. Cloud-based accounting software is just like your Gmail account, which you can access from your computer, laptop, mobile, tablet, iPad, iPhone, from anywhere. So similarly, the Zoho Books is a cloud-based accounting software which you can access from anywhere. You just need to have your internet connection. Without internet, it's not possible. You definitely must have your internet connection. So it's a cloud-based accounting software where you can generate your invoices. Even you can track your expenses. You can do bank reconciliation, or even you can generate reports like balance sheet, profit and loss, GST reports, TDS reports, audit trail reports. There are 45 plus reports, 50 plus reports you can generate from this Zoho Books. What are the benefits? You can improve your efficiency, accuracy, and decision making support. You get instant financial insight, and you can save your time, and you can also get information about your tax liability, like what tax we need to pay under GST, GSTR3B, what tax we need to pay as an advance tax. This all information we can get instantly if our bookkeeping or accounting is correct. Then, because for bookkeeping or accounting is input for all other reports. We need to file GST returns, then we must have proper bookkeeping.
or accounting. If we want to file our income tax return, then we must have proper bookkeeping or accounting. Even if you want to have proper balance sheet or P&L, then you must have your proper inputs, that is accounting and bookkeeping, even for budgeting purpose also. So if your bookkeeping is correct, then you can manage all your tasks efficiently. So Zohobooks is a cloud-based accounting software where you can generate invoices, track expenses, bank reconciliation, reporting. You can file your GST returns, e-invoicing, audit trail, document management. You can use your office as a paperless office, and you can manage all your documents in Zoho Books. Even you can do mobile accounting. Zoho have multiple apps like Zoho CRM, Zoho Payroll, Zoho Bookings. Multiple apps have Zoho have. So you can use that ecosystem to increase your productivity, and for collaboration, even you can collaborate with your clients through Zoho Books, and you can use smart automation. So I'll show you my screen how this Zoho Books is. So before that, I would like to add one more point over here. That is initiative of committee for members in practice. So do you guys know or members know that Zoho has 5 apps that is free for chartered accountants for 3 years. So this is very big benefit, which I say every chartered accountant who are in practice or even managing their finances should take advantage of this Zoho apps. So there are 5 apps which are totally free for chartered accountants. That is Zoho Books to manage your accounting, and second one is Zoho Practice to manage your CA firms, to collaborate with your clients. Zoho Expense to manage your expenses, staff expenses, travel expenses. If you have big organization, you have multiple staffs which are on travel most of the time, then you can use Zoho Expenses. Then Zoho Payroll to manage payroll in your company, and then Zoho Inventory for inventory management. So these are five apps which are absolutely free for the chartered accountants for 3 years. I'll show you the how you can take this benefit. I'll share my screen also. Just a second. Yes. So you can see this page, cmpbenefits.icai.org. There is a link available. So you have to click on that link only to get this benefit. So I'll show you that section. Here it is. Zoho Accounting Software and Initiative of Committee for Members in Practice. So you have to click over here, and then what you can do, here you can see Avail Zoho Accounting Software. And when you click here, you'll get this screen. And here you can see free 3 years, 5 apps. So you just need to put some information, and you need to create your free account. That is your firm name, email ID, member registration number, mobile number, password, and country and state. So once you click over here, you will get free access to these 5 apps. What are all these 5 apps? One is Zoho Practice to manage your all clients in a centralized portfolio. You can manage your clients, you manage your practice, and then Zoho Books to manage your accounting, and then Zoho Expenses to manage expenses in business, travel expenses or staff expenses. Then Zoho Payroll to manage payroll calculation if you want to calculate TDS, PF, ESI, all these statutory benefits compliances. Then you can opt for Zoho Payroll, and Zoho Inventory to manage real-time inventory. So I think this is a very good benefit, and I suggest every member to take advantage of uh, this CMP initiative. So now let's move to our next portion. So I hope you are clear about this Zoho Books. Now let's see how this Zoho Books dashboard look like. So I share my screen. Yes. So once you create an account, you will get one screen, and this is like a dashboard of Zoho Books. So I have already created an account in Zoho Books. So once you create an account, you will see this kind of screen.
where you will see home, items, banking, sale, purchase, time tracking, e-way bill, GST filing, accountant, reports, documents, and more feature options. So once you create an account, once you sign up into this Zoho Books, you will get this type of dashboard where in home screen or even on dashboard, you will get complete idea of your business. What are your total receivables? What are your total payables? This you will get from here only. And which is very much important, क्योंकि हम अकाउंट्स के अंदर कहते हैं बार बार कि जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग का दैट इज कि हमारे टोटल रिसीवेबल्स क्या हैं और हमारे टोटल पेबल्स क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए. So that you can see on your dashboard only. Then you have information about your cash flow. आपको आपके cash flow के बारे में पता होगा. Then you will have information about your income and expenses, top expenses. If अभी यहाँ पर Zobooks is not fully available with all inputs, but once you have your data available here, then you will get charts. What are your total top expenses? You will get pie chart over here. And then projects and bank credit cards, all these informations you will see on your dashboard. So this is UI, or you can say user interface of dashboard, and you can see it's pretty cool or easy. It's not that much traditional. That is the reason most business owner or people who are even not from accounting background are using this. Even new entrepreneurs or new startup owners would like to see this kind of dashboard. So this is a dashboard. Now let's move to my presentation again. So this is a complete dashboard. This is a Zoho Books. This is a complete cloud-based accounting software, and I have also informed you or told you about this initiative. And now, if you are using any other accounting software, maybe currently you are using Tele, and you would like to migrate into this Zoho Books. So how you can do this? So there are simple steps which you can follow, and even you can migrate your Tele data into Zoho Books. You can do it yourself, and you can do this for your clients also. And you can also generate this business also by migrating all your clients from Tele to Zoho Books. This is also new opportunity. You can say new way of earning revenue for all chartered accountants. You can help them, you can help your clients in migrating from Tele to Zoho Books. And now how it can be possible? First of all, you need to decide when your client or even you would like to migrate from Tele to Zoho Books. You need to decide about the cutoff date, because you can see now we are in new financial year. It's just a 1 month that has been crossed. So we are in the month of May. So it's very easy if you want to decide or if you want to migrate from 1st April 2024. So if you want to migrate your Tele data from 1st April 2024, you just need to have your opening balances and you need to record only 1 month or these 45 days transaction into this zones. First, you need to migrate your opening balances as on 1st April 2024, and then these 45 days from April to today 15th May, you can migrate all the transactions. Even if you want to migrate previous data, that can also be happen in Zoho Books. Templates are available. It's not automatic. Like you click on one button and all Tele data will move into the Zoho Books. It's not a one click, you can say, but there are Excel templates available which you can use to migrate your Tele data to Zoho Books. So first of all, you have to evaluate your existing Tele data. It must be final. It must be tallied with your final balance sheet. Then you need to, if there is any error or mistake, then you need to rectify that mistake first. You have to clean up your data or organize your data, and then you can export your Tele data in predefined templates, and then you can import that into Zoho Books. Once it is ready, you can do then reconciliation also later on, like sales reconciliation, bank reconciliations, to ensure that all data migrated properly. So these are the steps which you need to follow if you want to migrate from existing software. Even if you are using any other accounting software like BZ, then you can migrate into Zoho Books. Now, next part is, first of all, we'll talk about this Zoho Books interface. I'll sharing my screen of Zoho Books now. You can see. So in left hand side, you can see there are multiple tabs.
home, items, banking, sales, purchase, time tracking, e-way bill, GST filing, accountant reports. First, we need to set up our organization. So we'll click on settings, and then once we click on the settings on right hand side top, you can see profile. So you have to create your organization. You have to set up your profile. You can use your organization logo, organization name, industry which we belong to, organization location, address, website URL. Even you can integrate your company email ID also here to send all invoices from your company email ID. Someone has asked question, can we do accounting of multiple clients by single login? No, this facility is not available in Zoho Books. For every client, you need to have different ID or organization ID, but yes, this is possible. You can manage your all clients data over here. For example, you can see my organization right now. Here only one organization is coming, that is XYZ Private Limited. So as a chartered accountant, if you are managing Zoho Books for your clients, then you will see multiple clients over here. If you are having 10 organizations, you have 10 clients, then you will see all 10 clients over here. But clients have to buy different packages. Like in Tele, what we do once we buy a Tele, then we create multiple organization and we don't have to pay separately for each organization. This not happens in Zoho Books. In Zoho Books, you have to pay for each organization. But if you want to manage, then you can manage in a single place. Here only you can have one my organization, and here you can manage all your organizations. I hope I have cleared your answer. Okay. Now, so once we go to the setting part, we'll click on profile. So once we set up all the profile, you have to fill all the information and you have to select the current, your fiscal year, your currency reporting basis. You are managing your accounts on cash basis or accrual basis, date format, company ID, tax ID. Here you can have your GST number or corporate identification number. In case of private limited company, then you can manage your PAN number over here, so that you can mention in all your invoices. Then you can have your additional field. If you have any like MSME number, then you can add MSME field over here. Once you do that, you have to click on save button. So your organization profile is ready. So once it's done, you can go for a branding part. Here you can select about the colors and all the aesthetics which you want to have. Once it's done, here you can see here is an option to have a opening balances, because you are migrating from any other accounting software. So you need to put your opening balances. So here you can see I have option to add opening balances. So if you are just migrating right now from 1st April 2024, then you should note that you have to put migration date as a 31st March 2024. Because sometimes people do mistake and they put 1st April 2024 as a migration date. So I suggest you to use 31st March 2024 as a migration date, and then you can put all your assets balances over here, whatever assets you have as per your last final closed trial balance, your expense balances, your bank balance, your liabilities, your equity, or your income. All balances you can put over here for a migration purpose as a opening balances. So I got one question from CA Jankhana Shah, how to switch from one organization to another again and again. Single in sign in and sign out is required. So how you can do that? You can do one thing. You can go to here settings, and in that organization you can go to user and roles. Here you will get option of user and roles. So you can, for all organization, you can assign one user as an admin. So once you assign access of all organization to one admin, that admin can access all organization at one place.
I hope I have cleared your question. Okay, so once we go to the settings, then we are talking about opening balances because we are coming into this Zoho Books first time. So what we can do, we can import all balances into this Zoho Books from this tab. If you see there is no such chart of account or account available over here, for example, you have a different name or different chart of accounts available in Tally, then you can create such chart of account also in Zoho Books. I'll talk about that in later session, later part of session. Okay, so once you set up your opening balances, then I think your opening part is set. And even if you want to migrate your historical data, for example, if you want to migrate your transaction for the period of 22, 23, 23, 24, then such migration is also possible in Zoho Books. I'll talk about that also later. So first, I hope I'm clear about how you can migrate your opening balances. So once you set up your opening balances, then you can migrate all your transactions, or even you can start recording all your current period transactions in Zoho. Okay, now we have to talk about next part of this. So once you set up your organization, then I suggest you to go to this preference part and then journal. From journal, you can see you have multiple modules available in Zoho Books. In left hand side, you can see there are multiple modules. Home, item, banking, these are all modules. Sale, purchase, time tracking, e-way bill, GST filing, these are all modules in Zoho Books. So if you feel like any modules which is not relevant to you, for example, I don't generate e-way bill. So what you can do, you can disable this. From where you can go to preferences and click on journal, and then you can disable this. Even if you don't want to create estimate or sales order or something like that, you don't want time tracking Zoho Books, then you can disable this so that you can focus on main modules which are relevant for you. Then what is next part? You can default account for receiving retainer payment, that is advance payment. Where do you want to post that? By default it is going into unearned revenue. First date of starting work week, PDF attachment. Even do you give discount? If you give discount in your invoices, or I don't give discount, then you can select this, or you give discount at transaction level, each transaction. For example, when you create an invoices, you have multiple items and you give discount at each transaction level, then you can select this. Do you give adjustments, or do you charge shipping charges, or do you create invoices tax inclusive or tax exclusive? You can select accordingly. Do you round off your invoices, or do you want to create a field of salesperson in your invoices? Then you have to check whatever information is required for you. You can check that. And in last, because most people face problem in organization address format. So this part is very much important, because when we create an invoice, I got inquiries or doubts from many people that they are not able to format their invoice format header properly. So this is the header. Insert a placeholder. You can use this section. You can see I have clicked on preview button. I have clicked on preview button. So you can see in preview button how this organization name is coming. If I want to add further details or want to remove some information, for example, if you want to add GST label, or I want to remove GST label, then what I have to do, I have to just delete it. Now you can see, click on preview, GST number is not there. If I want to add GST number, how I will add? I'll click on this insert placeholder, and then I'll go to GST part, GST label. You can see GST, and then I'll add GST number also. I'll click enter and then insert placeholder and then GST number. So once you click on preview, you can see again GST number is there. So you can add or customize these field as per your choice. So this is the main thing. So once you do that, your profile part is also ready. Your preferences are also ready. So you have set up your account.
And then what you can do, you can set up your GST also. So where you will go to this taxes section. In tax and compliances, you need to set up your GST also. So what you can do for that, you can click on this taxes button. You can select tax rate, tax exemption. You have to go to GST settings. So once you go to this GST settings, you have to select GST number, business name or business trade name, GST number, and online filing. Here you have to put your GST username and period, like how do you file your GST return, on monthly basis or quarterly basis. If you are into QRMP scheme, then you can opt for QRMP or quarterly. And if you are into this monthly scheme, then you can select the monthly. And first tax period return which you would like to generate from this Zoho book. So I suggest you to post it as April 2024 if you are starting just now in this financial year. Then you can post as April 2024. And even if you want to enable approval system in this Zoho books, for example, if you have staff who is preparing GST return and you are finally approving this GST return before pushing this data into GST portal, you would like to ensure that that executive or staff have correctly prepared your GST return, then you can also enable approval system also. So once it's done, then one more thing, you also have to enable API access as GST portal. You have to log in into GST portal and you have to enable API access. For that, you can also take help document of Zoho. It's very easy. You just need to go into your GST portal. You have to log in. You have to go to profile section and there you can enable API for 30 days or more if available. So this is the way you can enable GST settings. So this is the initial settings which we are doing. We are just setting up our account right now. Once it's set up, then we'll go for how we manage accounting, how we'll do invoicing and all these things. This is the initial setup which we are doing. So what we have done till now, we have created an account in Zoho Books. We have created our profile. We have set up our taxes. Even if you want to enable e-invoicing, if your turnover exceeding certain limit, then you can enable e-invoicing also. You can connect it from here for e-invoicing. Even you can generate your e-invoicing because Zoho is also GST Suvidha provider in IRP. So step-by-step instructions are given over here. You have to just enable. Then all you can do, you can generate your e-invoice from Zoho Books only. So once you set up your taxes, your organization, your preferences, then we'll come to this invoicing part. First, I'll come to this sales part. So when you click on this sales module, you will see there are multiple sub modules, you can say, or sections available. First is customers, estimate, retainer invoice, sales order, delivery challan, invoices, payment links, payment received, recurring invoices, and credit notes. So you can see there is a proper flow because before selling anything, we need to have customers available. So first of all, what we do, we create a customers. So how we will create a customer, we'll click here and just click on new customer. So you can add any customer over here. For example, I'm adding one new customer, EFG Private Limited, and it's very easy. You just have to fill one form. So anyone can do this. So you have selected the proper organization, EFG Private Limited. You need to put email ID of your client, of your customer, so that you can send invoices through email also. You can put mobile number. Even through Zoho Books, you can send invoice through WhatsApp also. So this is a recent update in Zoho Books. You can directly send invoice through WhatsApp from Zoho Books. So you need to put mobile number of your customer over here and then other details. Other details are GST treatment. If your customer is registered under GST, then you have to select a registered business. If he is into composition scheme,
Then you have to select composition. If he's unregistered or a consumer, then you have to select consumer. So, and if he's a foreign client, then you can select overseas, SEZ, deemed export tax deductor, SEZ. So here I'm selecting as unregistered because I don't have any GST number available. So if you select registered, you need to put GST number also. And the best part is you can also get taxpayer detail also from here so that you can see whether your customer is active on GST or inactive. So I'm selecting as a unregistered, then you have to put his PAN number, tax preferences, taxable or exempt. You can put opening balances also here. For customers and vendors, you can put opening balances here also. Then payment terms. If your invoices are due on receipt only, then you can select payment term due on receipt. Otherwise, net on 30, 45. Also, you can enable customer portal. That is the best thing, which I really like. You can allow customer to access their invoices. Once you allow them to have their own portal, Zoho will create one portal for your customer. From there, they can see all their invoices and payments. So what is the benefit of this? You can save your time in manual reconciliation. At year end, what we do, we send our statement or account statement to all our customer for reconciliation purpose. So if we are having proper accounting, proper bookkeeping, then we just need to allow this portal so you can save your time or for a manual reconciliation. You don't have to engage any person or resource for this. Further, you can also upload any document relating to your customer KYC or something like that. You can also upload document over here. So I got one question also. Can we set up multiple currencies and can we set up multiple currencies like INR, USD, AED? Yes, you can do that. If you have customer in other country, then you can select this option. Right now, I'm using Zoho Books free plan, not CMP benefit plan. This is a complete free plan. So here, this option is not available. So, but once, or maybe you can see if I change it into overseas, no, this option is not available in free plan, but in paid plan or as a member, what plan you are using, in that this feature is available. You can select a currency and you can generate invoice in multiple currency also and charge in dollars or any other currency. Okay. So once you do that, you have to click on save. So I have created one customer. You can see that this customer has been created and you will get complete overview over here. Comments, transactions, mails. If I am sending any mails, you will get and record what, like, for example, if I am sending reminders for my invoices, then you can see these system mails over here. You can generate statement from here. Even more, if you click on this more button, you can associate templates. How you can manage templates? You have to go to settings and then you have to write templates. You have to click over here templates and you can see there are multiple options available here for invoicing purpose. For invoice purpose, because what we do, we create, sometime I have seen people creating invoicing in Excel and then recording those invoices in Tally. We are duplicating our task because sometimes people say we are not able to customize our invoices in Tally, or Tally invoices are not that much pretty, don't look that much pretty or good. So here you can see we can customize our invoices and you can see if I click here, these are the invoices templates which are by default available in Zoho Books. And you can see you can also customize this. How you can customize this? You can click on use this, or here is an edit button which you can use for customization purpose. Here you can see edit button. So once you click on edit button, you can see there in left hand side there are multiple tabs: journal, header, transaction detail, table, total, other details. If I want to add my bank details into this
invoice. How I can do that? I can add bank details and I can add my bank detail like bank name, IFSC code, account number. You can have your customization or add your bank details here, and this will be shown over here. Even you can collect payment online. You can integrate Razorpay or Paytm, such kind of payment gateway to collect payment online. So this is a very best part if you want to automate your accounting. Even if you want to have customization in this table, for example, as a service provider, I don't use this quantity table or column. So what I'll do, I'll go to this table button and I will disable this quantity tab. So now you can see this this column is not available. So you can customize this. If you want to further, if you don't want description, then you can disable this and click on refresh button. Only items detail will be mentioned. Description will not be there. So this is 100% customizable total. And further, payment made option. If you want to remove that, show amount in Word. If you want to remove that, other details. Further, if you want to make it more attractive, then you can also change background or you can also customize header. That is also possible. For example, if you want to further customize, so you can do that. So invoice are totally customizable and you can customize it from here. You can see one by one. All options are available. So I'm coming back to how to create customers. So I hope you are clear now how we create customers into this Zoho books. Now, once we create a customer, what is the next part? Next part is to create estimate or quotation, or what we say in our technical language is a performa invoice. Because if you are registered into GST and you send GST tax invoice to your client, so what will happen if you don't get payment from your client? Then you have to pay your GST. This we all are aware. So first, if you want to create an estimate quotation, then we can use Zoho for all these purposes. We'll click on estimate part. We'll click on new. One more thing I would like to add in customer part. For example, if I want to add customer in bulk, I have 100 customers. So instead of adding customer one by one, you can add all your customer in bulk. This is very much possible. How you can add your customer into bulk from in bulk? You can go to these three dots and you can click here on import customer tab or button, and you will click here import customer. I'll click continue, and once I click on this continue, you will get this sample CSV file or sample Excel file. So I'm downloading this sample Excel file so that I can show you what you have to fill and how you have to fill. So once you download this, you will get this Excel template to import all your customers in one shot. Let me show you this Excel file. I hope you can see my screen now and this Excel template to import all your customer in one shot. You just have to mention display name, place of contact, currency, company name, some fields which are mandatory, like salutation. This is not mandatory field. First name, last name, you can ignore if you are dealing with companies. Then you can just put display name or company name over here, and you can ignore this first name, last name option.
You can add email ID. You can add mobile number. Facebook, Twitter, notes, these are all not necessary or mandatory field. You can add website. If that customer is registered into GST, then you have to select business underscore GST. If your customer is not registered into GST, then you have to select business underscore none. You have to put GST number, PAN number, billing address, all these details you have to fill. So once you prepare this Excel file, once it is ready, what you can do, you can just click on this import file button. Here you have to just choose, you have to click over here and you have to choose this file which you have created or prepared. So once you do that, all your customer will come here and you will save your time. Instead of adding customer one by one, you can add all your customer in one. If there will be any error, Zoho will show that error. You have to rectify that error. Once all error are rectified, then you can create all your customers. So once you do that, you can create estimates or performa invoice. How you can create performa invoice? You have to just click on new. You have to select customer which you have already added in previous step. For example, I have added customer EFG Private Limited. You have to select estimate number. This is automatic series by default coming. If you want to customize this or change this, you can do that. You can select your organization or financial year or performa invoice like PI or number 0005. So this series will goes on automatically. You just have to change it once in a year. When you start a new financial year, then you just have to change it. Otherwise, this is automatic. Once you do that, then estimate date, quotation date, you can say expiry date if any, salesperson name. If you want to disable this tab or field, you can disable this also. Project name, then subject items, you have to select item over here. For example, we are providing, let's say, HR consulting services. You need to put quantity, rate, GST number if any, or GST rate. For example, 18% GST rate. So you can see invoices. This is performa invoice similar to invoice, and amount is 29,500. And what I'll do, I'll click on save button. Since I have created this customer as overseas, so it's saying GST is not applicable on export. So I'll click on save button. So you can see this performa invoice estimate has been generated. Even if you want to change this name, you can do that. How you can do that? You just go to settings and click on templates. Now we have to select performa invoice template or estimate template. So I'll click here and I'll click on edit button. So here I want name as a estimate instead of performa invoice. So I can do that. I'll click on header. Template property. Just a second. You get this option over here only to change this name. So instead of this performa invoice, you can change this into estimate or quotation if you would like. Right now I'm not able to fetch, just a second. Yeah, here it is. So if you want to change performa invoice to estimate, then you can do it from here. You can click on refresh button. So now you can see it's estimate. If you want to change it to quotation, so you can do it. Now it's showing quotation. So here you can do that and customize this.
as per your requirement. So once you do that, you can click on save button and you can generate all your performa invoices. So once performa invoice is ready, you can send it. You can send it by email. So once performa invoice are ready, so you don't need to download it and then you have to mail it separately. You can do it this in Zoho only. So once you do that, you can click on this send button, send mail. So once I click on this send mail, you can see by default it's going from your email ID from which you have registered into the Zoho books, and predefined or pre-written text is also coming. Even if you want to customize this, you can customize this. Further attachment are also going over here. Yes, so I got question how you can do automate work in Zoho books. So automation you can do. I will come to that part also. Here, what automation we are doing right now? We are creating estimate, invoice, customers, all from one platform. And the best part is you can also create a recurring invoices, which I will be going to talk about this recurring invoices. So recurring invoices means, for example, you have your client for which you are providing monthly bookkeeping services, monthly GST filing services, or monthly TDS filing services, and you have created one package for your client that may be for rupees 5,000 or 10,000 rupees. And on first of every month, you send invoice to your client. You do that. So how you do it all manually. In Zoho books, what we can do, we can create recurring invoices. If we have created one package for our client or bundled multiple services like GST, TDS, income tax, we have bundled multiple services, then what you can do, you can create one recurring invoices which will be generated automatically, and your client will get this invoice automatically on their email. So here you can automate one task, that is you can send invoices on recurring basis. Let's come to my PPT also. We were talking about invoicing automation. So Zoho books automate the process of creating invoices and sending invoices. So you can, by generating recurring invoices feature or using recurring invoices feature, you can create and send invoice automatically. You can customize your invoice template. You can send automatic reminders if your invoice is overdue for more than 7 days or 15 days. Then what you can do, you can send overdue reminders to your client automatically. You can save your time over here, because sometimes we do, as a chartered accountant, we are more busy into our work. We even sometimes we even didn't get time to send invoice and we miss our payment. Even when we send invoice, we are not able to follow up with our clients. So through Zoho books, you can automate this task. You can create invoice automatically. You can send reminder automatically. You can integrate payment gateway and allow your client to make payment online. So this is the automation task which we can do. This is, I'm just talking about invoicing only. Later on, we'll talk about banking part, how we can do banking automation. Okay. Yes. So this setup is done by client himself. Request to please focus the part benefit for the chartered accountants. Okay. So now let's move to the next part, that is, because today's our agenda will taking care for everyone. So just a second. So we'll stay on our agenda and then we'll come about to other things only. Other topics also will come about. We'll talking about introduction, setting up, opening balances, and handling day-to-day transactions. And tomorrow we'll be discussing about banking. I'll try if I can touch any part from this also, like connected banking, GST filing automation, TDS manual journal and reports. Okay.
Now next come to after creating invoicing and estimate, next part is to generate invoices or convert this estimate into this invoice. Once we create this invoice, what we can do, we can also check whether this invoice has been approved by your customer or not. What we can do, we can convert once this invoice has been approved, or you can say your client is ready to pay for this, you're ready to take your services, you have sent this performa invoice and your client is ready, then you can convert this estimate to invoice also. So we'll click on this invoice and automatically this estimate will be converted into invoice. You can see I'm converting this performa invoice to invoice. I don't have to do anything. If there is any change in price, for example, we are agreed to provide these services at rupees 20,000 instead of 25,000. So what we will do, we'll click on this rate 20,000 and we'll click on this save button. So now you can see automatically performa invoice has been converted into tax invoice. And you can also see here on estimate part that this estimate has been invoiced. Even you can change this invoice. Once you create this invoice, you can send this invoice to your client also from here only. So I'll click here, we'll click on send email. I have enabled e-invoicing, that is why it's saying push to IRP. So here I have converted this invoice, and even you want to download this, so you can download this to PDF file, you can take a printout and other things. So we have done the invoicing part, estimate part, customer part. This is a complete flow which we need to follow for anything. So once we create an invoice, the next part is there are also option available for retainer invoice, sales order, delivery challan. So if you are dealing in goods or if your client is dealing in goods, then you can convert this estimate into sales order also. So you will get an idea how many sales order you have. But generally, as a service provider, what we do, we first create a customer, then create an estimate, and then create a tax invoice. And later on, we receive a payment. That is a complete flow, you can say, as a sales part. First, we create a customer, then we create an estimate, then we create an invoice, then we receive a payment. And if there is any sales return or a credit note, then we do that also. Here is a payment link button also. You can integrate this payment gateway. There are multiple payment gateway option available, which you can do here. You can take a benefit of payment gateway integration. That is Razorpay, Stripe, EasyPay. You can integrate these payment gateway also and collect payment online. So once you do that, the next part is to create a credit. For example, if there is any sales return or any change in the quantity or rate, something like that, then you can create a credit note, which we call in a layman language sales return. So we can create sales return from here. And one more thing, if you are migrating from Tele to Zoho Books, so maybe you are having 1000 invoices or 500 invoices in Tele. For example, we are migrating from 1st April 2024. And today is 15th May 2024. And for these 45 days, we have generated 100 invoices in Tele. And now we want to migrate that into this Zoho Books. How we will do that? What we will do? First, I'll export all my customers from Tele in one Excel file. And here I'll click on import that I have already told you. Next, what we will do, we'll import all invoices in bulk. All invoices in bulk. For that, what we will do, we'll click on this three dots, and we'll click on import invoices. If you want to import bill of supply, you can import bill of supply. You can import, you will click on import invoices. So once you click on import invoices, you will see this screen. And here you will get this Excel template.
Through this Excel template, you can migrate all your tele invoices or tax tele invoices into this Zoho. So I believe this will save your lot of time. Instead of doing manual integration or manual import, you can do this, use this tool, Excel tool. Okay. So now let's talk about more part. I'll come to this banking part about the automation. How we can automate our banking or bank integration, how we can do integration into this bank account, and how we can automate our banking. So once you set up your home, your journal things, your items, you'll come to this banking part. Here you can automate your banking. You need to add your bank account. You can see there are multiple banking partners available over here, like Standard Chartered, HSBC, Kotak Mahindra, Yes Bank. So instead of having all entries doing manually, जो हम entries tally के अंदर करते हैं वो हम कई बार entries manually करते हैं. इन Zoho Books हम क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ रही है वो सारी ट्रांजेक्शन Zoho Books के अंदर ऑटोमेटिक आ सकती है. और यहाँ पर आप अपना अकाउंटेंट का खुद का काफी ज्यादा समय आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं. Instead of adding all entries manually, what you can do, you can add your bank account. यहाँ पर कुछ बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, कोटक महिंद्रा और येस बैंक, जिसके साथ Zoho का बैंकिंग इंटीग्रेशन अवेलेबल है. वो करने के बाद आप सारी जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है बैंक की यहाँ पर आ जाएंगी और फिर उन ट्रांजेक्शन को वन बाय वन आप कैटेगराइज कर सकते हैं और इवन आप ट्रांजेक्शन रूल्स लगा सकते हैं. व्हाट इज ट्रांजेक्शन रूल्स इन Zoho Books? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर लिखा आ रहा है ओला उबर, तो आप उसको रूल दे सकते हैं, वर्कफ्लो बना सकते हैं कि अगर ओला उबर लिखा आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो खर्चा ट्रेवल एक्सपेंस में डेबिट हो जाए. तो हेयर यू कैन सेव योर टाइम. अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में BSES इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है तो इट मीन्स ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है. BSES यमुना या पावर कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है, तो हमने Zoho को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि अगर इस तरह के कीवर्ड्स हमारी बैंक स्टेटमेंट की नरेशन में लिखे हुए आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पोस्ट सच एक्सपेंसेस इनटू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. सिमिलरली जोमैटो, कुछ अगर जोमैटो लिखा आ रहा है, स्विगी लिखा आ रहा है, तो वी कैन डेबिट दैट एक्सपेंस इनटू मील और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. सो दिस विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम. एक एंट्री को बार बार करने की बजाय जो Zoho Books का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग है, वो बार बार उस ट्रांजेक्शन को रीड करेगा और ऑटोमेटिकली उस खर्चे को वहां पर डाल देगा और यहाँ पर आप अपना काफी ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे. यस. किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ओनली दिस बैंक, इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक है, अभी करंटली सिर्फ इन्हीं बैंक के साथ Zoho का इंटीग्रेशन अवेलेबल है जहां पर आप ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन को फेच कर सकते हैं. अगर उसके अलावा आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पर ऐड मैनुअली में जाएंगे. फॉर एग्जांपल मेरा बैंक है HDFC, सो आई सिलेक्ट HDFC और आई पुट अकाउंट नंबर, जो भी मेरा अकाउंट नंबर है, एंड देन बैंक नेम. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 1212 बैंक है, उसका मैं IFSC डालूंगा और सेव बटन पर क्लिक करूंगा. एंड नाउ यू कैन इंपोर्ट योर बैंक स्टेटमेंट, बैंक PDF फाइल ऑल्सो. आपको बैंक की अपनी PDF फाइल नेट बैंकिंग से डाउनलोड करनी है एंड यू कैन इंपोर्ट दैट फाइल इनटू दिस Zoho Books. और जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी आपकी अभी पिछले 45 डेज की, वो ऑटोमेटिकली दैट विल कम ओवर हियर. यस. और अगर आपका उससे भी प्रॉब्लम आता है, वैसे तो यू कैन इंपोर्ट PDF फाइल और एक्सेल फाइल. यहाँ पर you will click on import file, you will choose that PDF file. There are multiple options available over here. You can import CSV, TSV or Excel or multiple kind of file, or even you can download sample file. Even further, you can also integrate your credit card also. If you want to integrate your credit card,
then you can also import your credit card also. अगर आपका क्रेडिट कार्ड इन्हीं किसी बैंक के साथ है तो जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे तो वो उन्हीं के साथ इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप उसे मैन्युअली ऐड कर सकते हो. सो हेयर यू कैन सेव योर लॉट ऑफ टाइम. लेट मी शो यू कि आप, क्योंकि क्या है ऑटोमेशन की अगर हम बात की जाए कि व्हाट ऑटोमेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, यू आर इंटीग्रेटिंग योर बैंक अकाउंट. तो आपने अपना बैंक अकाउंट इंटीग्रेट कर लिया, सारी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है. ऑटो आप अपनी वेंडर्स को डायरेक्टली यहाँ से पे कर सकते हो. अगर आप इन पार्टनर्स बैंक के साथ अपना बैंक अकाउंट अगर आपका है और अगर आप वेंडर पेमेंट करना चाहते हो, तो instead of going to net banking portal, you can directly make payment to all your vendors through this Zoho books only. So here you are saving your time. तो अभी तक मैंने ऑटोमेशन के बारे में आपको क्या क्या बताया, कहाँ कहाँ पर ऑटोमेशन अवेलेबल है. फर्स्ट ऑटोमेशन, इनवॉइस क्रिएट करते हुए यू कैन जनरेट रेकरिंग इनवॉइसेस. here you are doing automation. Second, you are collecting payment online. Customer is making payment, you are sending your payment links, so customer is making payment online. Here you are saving your time. Third, bank integration. You are using connected banking. You are fetching your transactions automatically into the Zoho books. Here again you are saving your time. Vendor payment. You are making payment directly through Zoho books instead of going to net banking portal. So again you are saving your time. Next, you are applying transaction rules in your बैंक स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली जोहो ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर रहा है, तो अगेन यू आर सेविंग योर टाइम. तो अगर मैं इन सबको कलेक्ट करता हूँ, इन सारी बातों का भी आई टॉक मोर अबाउट इट. अगर मैं इन सब बातों को कलेक्ट करता हूँ तो आई थिंक यू कैन सेव 1 वीक के अंदर जो काम में आपको ज्यादा टाइम टाइम लगता है उसमें आप 25%, 30% तक उन चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं. यस, अदिति जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू चेक आफ्टर अ बैंक स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेड वेदर एंट्री इज पोस्टिंग करेक्टली और नॉट लाइक एक्सपेंस और इनकम. तो व्हाट यू कैन डू व्हेन यू इंपोर्ट अ बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपके पास आपने बैंक स्टेटमेंट लास्ट की कहाँ तक की इंपोर्ट करी है, टिल व्हाट डेट यू हैव लास्ट इंपोर्टेड योर बैंक स्टेटमेंट. यू विल गेट दिस ऑप्शन, यू विल सी दिस ऑप्शन. और फर्दर जब आप ट्रांजेक्शन रूल्स लगाते हो, व्हेन यू पुट अ ट्रांजेक्शन रूल्स इनटू द ज़ोहो बुक्स, तो आप ज़ोहो बुक्स को दो ऑप्शन दे सकते हो कि या तो ट्रांजेक्शंस को पोस्ट कर दे डायरेक्टली उन लेजर्स के अंदर, या फिर उन ट्रांजेक्शन को इन अ ड्राफ्ट फॉर्मेट रखें, आप पोस्ट करें उसे पर्सनली. तो आई वुड सजेस्ट यू व्हेन यू आर न्यू इनटू दिस ज़ोहो बुक्स, जब आप ये ज़ोहो बुक्स को न्यू यूज कर रहे हैं, तो आप जब कोई ट्रांजेक्शन रूल्स लगाते हैं तो आप उसे ड्राफ्ट फॉर्मेट में रखें. आप चेक करें कि क्या वो जो जोहो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मशीन लर्निंग से आपने जो उसको रूल बताया, क्या वो उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है. अगर वो वैसा परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली you can go for a next part. Then you can tell Zoho to post all these transactions. Yes. Next question है, kindly explain data security and integrity and data backup. Okay. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको जोहो की डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी के पर लेकर जाऊंगा, सो दैट यू विल गेट कंप्लीट आइडिया कि जोहो की डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है और आप अपने डेटा का बैकअप कैसे ले सकते. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि आप अपने जोहो का डेटा का बैकअप कैसे ले सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल, जोहो इज अ क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. जोहो आपकी कोई मशीन में नहीं है, आपके कंप्यूटर पे नहीं है, ये क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. तो इट इज नॉट रिक्वायर टू टेक बैकअप ऑन डेली बेसिस, क्योंकि पहले क्या होता था, आई हैव यूज टेली, तो मुझे पता है कि टेली में अगर हमारा सर्वर करप्ट हो गया हमारे ऑफिस के अंदर, तो हमारे टेली का जो डेटा है वो भी करप्ट हो जाता है, और वो करप्ट हो जाता है तो फिर हमारा सारा जितना भी काम है वो खराब हो जाता है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. अगर हमारा जो सर्वर है वो करप्ट हो जाता है जिसके अंदर टेली इंस्टॉल है,
अगर उसके अंदर जितना भी क्लाइंट डेटा है वो अगर हमारा करप्ट हो जाता है तो हमारा सारा डेटा करप्ट हो जाता है। बट इन जोहो यहाँ पर आप डेटा बैकअप ऑनलाइन होता है, आपको मैनुअली डेटा बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। तो आप जब सेटिंग्स में जाते हैं, व्हेन यू क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड यू क्लिक ऑन डेटा बैकअप, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं डेटा बैकअप का, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बैकअप योर डेटा। तो मैंने एक सेपरेट आईडी बनाई हुई है, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो जितना भी डेटा है वो बैकअप होना शुरू हो गया है इन CSV फॉर्मेट, और थोड़ी देर में मेरी मेल पर आ जाएगा। अगर मैंने कोई अटैचमेंट्स वगैरह भी जो में डाल रखी है और मैं उनका भी बैकअप लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनवॉइस क्रिएट करे या मैंने कोई बिल्स रिकॉर्ड करे जो बुक्स के अंदर, और उन बिल्स के साथ मैंने एज अ अटैचमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, बिल्स लगा रखे हैं जितने भी एक्सपेंसेस है, तो मैं उनका भी बैकअप लेना चाहता हूँ, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट बैकअप। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। तो जो डेटा है वो सारा आपका क्लाउड पर है और इसका जो डेटा है वो इंडिया के डेटा सर्वर पर है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी पॉलिसी चेक कर सकते हैं जोन बुक्स की, जहाँ पर इन्होंने सब कुछ इन्फॉर्म किया हुआ है कि दे डोंट सेल योर डेटा। यस। और इन अदर कंट्रीज GDPR कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं। GDPR कंप्लायंसेस, अभी दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। तो GDPR कंप्लायंसेस में दे हैव टू कीप ऑल डेटा, दे हैव टू फॉलो देयर प्राइवेसी पॉलिसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ को इन्हें फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज इसके ऊपर काफी ज्यादा पेनल्टीज हैं। और अगर इंडिया में बात की जाए तो यू कैन सी अबाउट दिस, यहाँ पर सिक्योरिटी और कंप्लायंसेस के बारे में बताया हुआ है। compliances. So all these data are secured and Zoho don't sell this data, and जितना भी डेटा है वो प्राइवेट रहता है। यहाँ पर इसकी प्राइवेसी पॉलिसी, ग्लोबल प्राइवेसी पॉलिसी भी है और प्राइवेसी FAQ भी दिए हुए हैं। Like, do you have privacy policy? Do you comply with GDPR compliances? What are the terms of services? Where is my data stored? कहाँ पर स्टोर है? अगर आप zoho.in पे करते हैं तो इट इज स्टोर्ड इन इंडिया डेटा सेंटर। तो आई सजेस्ट यू, जब भी हम अपना नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जोहो बुक्स, तो डोंट क्रिएट योर अकाउंट इन zoho.com। अगर आप अपना zoho.com पे अपना डेटा अकाउंट अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इट विल बी ऑन US डेटा सेंटर। ओके, सो दीज आर द ऑल पॉलिसी विच यू कैन गो थ्रू इन डिटेल। आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं zoho.com/privacy। इस पे जाके आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट किस तरीके से बैकअप लिया जाता है जोहो के अंदर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन। सो अभी हमने कई सारे ऑटोमेशन देख लिए। अब नेक्स्ट टॉक अबाउट परचेजेस। सिमिलर टू सेल्स, दीज आर अवर डे टू डे ट्रांजेक्शन, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन में हमें सेल्स के इनवॉइस बनाने होते हैं और ये हमें बल्क में भी बना सकते हैं, और इसे आप अदर जोहो के ऐप के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं जोहो CRM के बारे में, जोहो बिगिन के बारे में, जहां पर अपने क्लाइंट्स का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंक्वायरीज आती है, लीड्स आती हैं, तो वहां पर आप जोहो बिगिन के अंदर, जोहो CRM के अंदर उसे क्रिएट कर सकते हैं और उस जोहो CRM को जोहो बुक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल एप्स अवेलेबल इन जोहो। जोहो बुकिंग, अगर आप 1-to-1 बुकिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आप जोहो बुकिंग यूज कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने टैक्स ऑडिट के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग रखी, तो आपने जोहो बुकिंग के थ्रू टैक्स ऑडिट की मीटिंग रखी और उसका इनवॉइस बनाया, तो वो इनवॉइस जोहो बुकिंग के साथ आपने जोहो इनवॉइस के साथ लिंक करके वो ऑटोमेटिकली बना दिया। ओके, तो दीज काइंड ऑफ ऑटोमेशंस और प्रोडक्टिविटी टूल अवेलेबल इन जोहो। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो डे टू डे टास्क है, रूटीन टास्क है, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, could you please give demo of transaction tool after completing seminar? Can you give demo of bank account import with automation? Yes, बैंक अकाउंट के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें जाना होगा इस HSBC, फॉर एग्जांपल HSBC के साथ काफी अच्छा इंटीग्रेशन है जोहो बुक्स का। तो आप HSBC यहाँ पर अगर आप जाएंगे जोहो बुक्स HSBC, तो यहाँ पर कनेक्टेड बैंकिंग के अंदर आपको इसके क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल हो पाएंगे। सबसे पहला, आप वेंडर को पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं थ्रू जोहो बुक्स। दूसरा, आप जीएसटी पेमेंट डायरेक्टली जोहो बुक से कर सकते हैं, और उसकी जो ऑटोमेटिक एंट्रीज है, जब आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न भरते हैं, और जो जीएसटीआर 3B की जब हम रिटर्न भरते हैं, तो उसके बाद जब जीएसटी में जमा कराना होता है, व्हेन वी हैव टू पे दैट जीएसटी, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वो जीएसटी की पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। यू कैन फेच योर बैंक फीड्स एंड रिकंसाइल डेटा एफर्टलेसली, व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस एंड रियल टाइम अकाउंट बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये आप इसको एक बार इस मॉड्यूल को गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कैसे करेंगे, HSBC पे जाएंगे, सेटअप करेंगे, इवन बल्क पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमें कई बार बल्क पेमेंट्स करनी होती है हर महीने की 10 तारीख को या 15 तारीख को, जितने भी वेंडर्स के बिल आए हुए हैं हमें वो क्लियर करने हैं। तो वो आप वेंडर्स की पेमेंट को इंडिविजुअली और इन बल्क कर सकते हैं। दिस इज द ऑटोमेशन। ओके, तो यहाँ पर सेटअप करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके आईडी पासवर्ड होंगे वो आपको डालने होंगे, तब जाके आप उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी इंटीग्रेशन था, लेकिन अभी रिसेंटली वो जोन बुक्स का खत्म हो गया, या जो भी जोन बुक्स के आईसीआईसीआई बैंक के यूजर्स हैं वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अगर आपका ऑलरेडी पहले से इंटीग्रेट आईसीआईसीआई बैंक, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर अब आपने उसको डिसइंटीग्रेट करके वापस इंटीग्रेट करने हैं, तो मे बी यू कैन फेस चैलेंज। After sales, what is our routine task is to record day-to-day expenses or bills. So let's talk about how you can add vendors. So it's very simple. You have already seen कि मैंने customers कैसे add करे थे. So in a similar format, you can add your vendors. So when you add your vendor, you can add his TDS detail or further any documents relating to MSME certificate or something like that. You can add that, और उसकी बैंक अकाउंट डिटेल भी आप वेंडर की ऐड कर सकते हो, ताकि लेटर ऑन आप अपने वेंडर को बैंक जो पेमेंट है वो यहीं से रिलीज कर पाओ थ्रू जोबुक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्स। जो भी डे टू डे बिल्स आते हैं हमारे पास, और एक है एक्सपेंसेस। दो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर आप जो बुक्स में न्यू यूजर है, तो कई बार वी गेट कंफ्यूज्ड कि एक्सपेंसेस में और बिल्स में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस और बिल्स। एक्सपेंसेस वो है जहां पर हम डायरेक्टली पे कर देते हैं और हमारे पास कोई रिसीट अवेलेबल नहीं होती, तो उन्हें हम एक्सपेंसेस मॉड्यूल में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस, अगर हम बैंक चार्जेस पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी रिसीट और बिल, तो वी विल रिकॉर्ड दैट एक्सपेंस इन एक्सपेंस मॉड्यूल। कोई ऑटो एक्सपेंस है या ट्रेवल एक्सपेंस है जिसका बिल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ना ही हमें कोई वेंडर की स्टेटमेंट जनरेट करनी है, तो देन वी कैन रिकॉर्ड दैट इनटू एक्सपेंस सेक्शन और एक्सपेंस मॉड्यूल। व्हाट वी कैन डू इन बिल, हम यहाँ पर बिल्स क्रिएट करते हैं, जितने भी बिल्स होते हैं। अब जोहो के अंदर ऑप्शन है कि आप बिल अपलोड करो, तो वो ऑटोमेटिकली OCR टेक्नोलॉजी से आपका बिल को रीड करेगा और ऑटोमेटिकली एंट्री रिकॉर्ड कर देगा। बट अभी आई हैव सीन ये अभी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो आप मैनुअली कर सकते हैं क्रिएट न्यू बिल। तो यहाँ पर मैंने बटन क्लिक करा, न्यू बिल करा, कोई भी वेंडर है उसका आप यहाँ पर बिल क्रिएट करेंगे। और बेस्ट पार्ट इज यू कैन डू, यहाँ पर आप एज अ अटैचमेंट बिल भी अपलोड कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग एक पूरी फाइल, जो पूरे फाइल मेंटेन करते हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, 23-24 फाइनेंशियल ईयर की, वो सारे बिल्स हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और एज अ ऑडिटर, जो भी ऑडिटर होगा वो यहाँ पर, मैं आपको एक बिल रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। लेट्स से वी आर एडिंग वन, हमने एक वेंडर ऐड करा, लैपटॉप सप्लायर, हमने एक लैपटॉप परचेज करा, एंड बिल टूडेज डेट का है, और हमने लैपटॉप परचेज करा। Account computer, let's say we purchase it for 50,000 rupees. Tax rate is, let's say tax is not, क्योंकि मैंने unregistered business कर रखा है। TDS अगर applicable है तो you can select TDS also, since we are purchasing laptop, तो यहाँ पर applicable नहीं है। अगर कोई professional charges का बिल होता है या rental बिल होता, तो I can also select bills also। तो यहाँ पर TDS नहीं select करेंगे और click on save। So you can see मैंने एक बिल क्रिएट कर दिया,
और कन्वर्ट टू ओपन करेंगे इसे। सो वंस यू कन्वर्ट टू ओपन, यू कैन सी इसके नीचे जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पर शो करता है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, and then you can upload or attach file over here. You can see you'll get option to upload file, 5 MB each. ये जो आपने कंप्यूटर परचेज करा उसकी अटैचमेंट आप यहाँ लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल फाइल। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। तो इस तरीके से आप पेपरलेस और कमेंट एंड हिस्ट्री, अगर कोई पर्सन इस बिल के अंदर चेंज करता है, कोई भी अगर किसी भी तरीके का चेंज किया जाता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पूरी क्रोनोलॉजी के अंदर बताया जा रहा है कि इस बिल को कब किसने एडिट करा। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस बिल को अब वापस से एडिट करूँ, तो इसमें पूरा ऑडिट ट्रेल जिसको हम बोलते हैं वो अवेलेबल है। अब मैंने इस बिल को 45,000 कर दिया और मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पर दिखाएगा कि एट दिस टाइम दिस पीएम दिस यूजर ने बिल को 50,000 से 45,000 कर दिया। So you can see there is proper transparency. अगर कोई भी यूजर देखना, जो एडमिन है वो देख सकता है कि कब कौन सा यूजर क्या कर रहा है, किसने बिल को चेंज करा, कब क्लाइंट को बिल अगर इनवॉइस है तो कब मेल किया गया। यस, okay, so this is a bill part. So once you make the payment of this bill, so you can click on record payment button from here. और इवन जब आप अपना बैंक इंटीग्रेट करते हैं, तो बैंक के अंदर जोहो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आपकी कितनी ट्रांजेक्शन्स कैटेगराइज है, कितनी ट्रांजेक्शन अनकैटेगराइज है। अभी यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन अनकैटेगराइज दिखा रहे हैं। जब मैं बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करूंगा और मेरी बैंक स्टेटमेंट में लेट्स से 40 ट्रांजेक्शन 50 ट्रांजेक्शन आ रही हैं, तो वो 40-50 ट्रांजेक्शन एज अ अनकैटेगराइज विल बी शोन ओवर हियर। सो आई क्लिक ऑन अनकैटेगराइज ट्रांजेक्शन, एंड यहाँ पर अगर वो बिल 45,000 का है और मेरे यहाँ पर विड्रॉल में 45,000 आ रहे हैं, तो जोहो ऑटोमेटिकली इसे पॉपुलेट करेगा, डू यू वांट टू मैच दिस ट्रांजेक्शन। क्योंकि जोहो का मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देख रहा है कि आपने अगर एक इनवॉइस बनाया है 50,000 का और आपके बैंक में डिपॉजिट आ रहे हैं 50,000, तो जोहो उसे रिलेट करने की कोशिश करेगा। अगर आपने कोई इनवॉइस बनाया है 40,000 का और आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट में 40,000 आ रहे हैं, तो जोहो उसे ऑटोमेटिकली रिलेट करने की कोशिश करेगा, उसे मैच करेगा। सो हेयर यू कैन डू दिस। अब मैंने अगर मेरे बुक्स के अंदर अगर कोई 23,600 का इनवॉइस होगा और मेरे को अगर इनवॉइस की पेमेंट 23,600 आ रही है, तो जोहो विल रिलेट दिस एंड यू कैन मैच दिस मैनुअली। ओके, so once you do that, once you are clear about this banking, clear about this sales, clear about this purchase, फिर आता है हमारे पास वेंडर क्रेडिट। वेंडर क्रेडिट इज सिमिलर टू लाइक परचेज रिटर्न। सो यू कैन डू परचेज रिटर्न, आप परचेज रिटर्न वगैरह यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं जितने भी हैं आप with reasons. Or even if you want to, if you are migrating from Tally or any other accounting software, then you can import all vendor credits in a bulk. Okay. So what we are talking about next part is expense tracking. Expense tracking. I hope you can see my screen now. Zoho के अंदर best part ये है कि what you can do. One, we have Zoho books. I can show you there are multiple apps also available. Our today's agenda is only about Zoho books only, but I am giving you just an idea कि Zoho के अंदर आप Zoho invoice एक available है, that is completely free for all. Zoho invoice, this is a tool to generate invoice only. अगर आपको invoice बनानी है, तो invoice बनाने के लिए Zoho invoice है, free है, इसको कोई भी यूज कर सकता है for everyone. Zoho books is for chartered accountants free, but Zoho invoice is free for everyone. Even Zoho books is free if your turnover is less than rupees 25 lakh. अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से कम है, तो इवन Zoho books is also free. एंड Zoho एक्सपेंसेस की जो मैं बात कर रहा था,
जोहो एक्सपेंस या फिर हम जोहो पेरोल जो हम बात करते हैं, पहले जोहो एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जोहो एक्सपेंस इज अ ट्रेवल एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ है जो बहुत ज्यादा ट्रेवल पर रहते हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज जो है वो अपने एक्सपेंसेस करते हैं और उसको बाद में एज अ रिम्बर्समेंट क्लेम करते हैं, तो वहां पर जोहो एक्सपेंस यूज किया जाता है। एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल ऐप में अपने एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं, और जब वो एक बार अप्रूव हो जाते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक एंट्री जोहो बुक्स के अंदर आ जाती है। तो हेयर यू कैन सेव योर टाइम, यू कैन हैव, यहाँ पर हम एक सिस्टम बना सकते हैं, ट्रेवल बुकिंग का सिस्टम बना सकते हैं, ताकि अगर किसी को ट्रेवल पर है या कोई एक्सपेंसेस क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जोहो एक्सपेंस यूज किया जाता है। ट्रेवल के लिए, एक्सपेंस के लिए इवन कार्ड्स इसमें अटैच किए जा सकते हैं, और फिर उसी के थ्रू वो सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली जोहो बुक्स के अंदर पोस्ट हो जाती है। तो हेयर यू कैन ऑटोमेट these things, and this solution is for multiple organization like consultants, manufacturing business, educational, non-profit, multiple kind of businesses. और जहां तक बात करें हम जोहो पेरोल, जोहो पेरोल, जोहो पेरोल is also integrated with Zoho books. Zoho payroll is for salary management. एम्प्लॉयज की जो पेरन है उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हम जोहो बुक्स के साथ। सो अगेन यू कैन सेव योर लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। सो जब ये सारी चीजें एकदम सिंक में काम करती है, जब आप समझिए कि व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग योर बैंक अकाउंट, यू आर creating recurring invoices, you are applying transaction rules, you are making vendor payments directly from Zoho, you are taking advantage of Zoho expense, you are taking advantage of Zoho payroll. So I can see कि आप 25 to 30% अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज आई हैव सीन अभी भी कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेशन में काम नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं कि जीएसटी की भी अगर ड्यू डेट होती है तो क्लाइंट विल सेंड देम देयर जीएसटीआर डेटा, देन जो ऑफिस के अंदर हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, स्टाफ है या इंटर्न है, पहले उस जीएसटी डेटा को डाउनलोड करेगा, फिर वो उसे ओपन करेगा, फिर उसके अंदर अगर कोई एंट्री होगी तो वो एंट्री हमारे यहाँ होगी, फिर हम उसे वापस उसको भेजेंगे। तो ये टू एंड फ्रो में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इंस्टेड हम उसको कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बार बार इस टू एंड फ्रो की। हाँ, I have one client, CA Sumit Verma जी का क्वेश्चन है, I have one client who is automobile dealer. How can we record his purchase and sale as he want vehicle model to be differentiated on the basis of color, model number, unique product number is a chassis number. Please show one example. तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि जोहो इन्वेंट्री का आपको यूज करना पड़े, क्योंकि जोहो बुक्स के अंदर आप यहाँ पर आइटम के अंदर आपको मल्टीपल आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आइटम के अंदर कंपोजिट आइटम्स का ऑप्शन होता है हमारे पास। मैं एक बार आपको शो करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आप आइटम्स में जाते हैं। अभी यहाँ पर आइटम्स के अंदर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही आ रहे हैं मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई आइटम क्रिएट करे, आइटम्स का मतलब है यहाँ पर जिन भी गुड्स या सर्विसेज में हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप न्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स, सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो सर्विसेज, अपनी सर्विस का नाम जो भी सर्विस है, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल मैं आईफोन सेल करता हूँ तो आईफोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब आईफोन के अंदर मैं फर्दर ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 15, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट इज नॉट अवेलेबल इन जो बुक्स, दैट इज अवेलेबल इन जो इन्वेंट्री। आपको उसको जो इन्वेंट्री को अनेबल करना पड़ेगा यहाँ से। जो इन्वेंट्री, अभी मैंने यहाँ पर जो इन्वेंट्री अनेबल नहीं करा हुआ। सो वंस यू क्लिक ऑन, यू कैन यहाँ पर यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री ऑल्सो। वहां पर आप डिफरेंट इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं।
give some idea about Zoho practice and its usefulness in CA practice. Yes, we'll have separate discussion for that. Let's stick to Zoho books today. Zoho practice is for practice management. आप अपने सारे clients को वहां पर manage कर सकते हो, but let's stick to Zoho books for today's session. सो जोहो इन्वेंट्री के थ्रू आप कर सकते हैं, जो अगर आप मल्टीपल इनवॉइस वो क्रिएट करना चाहते हैं, आइटम्स क्रिएट करना चाहते हैं, और इवन इनवॉइसिंग के अंदर अगर आप अपनी कोई कस्टम फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, what I'll do, I'll go to this settings or I'll go to this custom field. Here you can see I have custom field available. कस्टम फील्ड का मतलब मैं इनवॉइस के अंदर एक कोई अपनी फील्ड चाहता हूँ, अपनी कस्टम फील्ड चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, आई विल गो टू दिस सेल्स पार्ट एंड आई विल गो टू दिस इनवॉइस पार्ट एंड फील्ड कस्टमाइजेशन, एंड यू कैन सी यहाँ पर बड़ी सारी फील्ड्स हैं और अनअवेलेबल इन योर करंट प्लान. मैंने बताया आपको कि अभी ये फ्री प्लान है, बट आप जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लान यूज करेंगे उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है. मैं यहाँ पर कोई कस्टम फील्ड लगाता हूँ, लेट्स से ट्रांसपोर्टर डिटेल. फॉर एग्जांपल अगर हम गुड सेल कर रहे हैं और मुझे ट्रांसपोर्टर डिटेल्स भी चाहिए अपने इनवॉइस, तो मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स डिटेल ऐड करूंगा और टेक्स्ट बॉक्स बनेगा. किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स होगा ये भी आपको यहाँ पर शो करेगा. प्रीव्यू बटन आ रहा है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टर्स डिटेल. जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो एक बॉक्स और आ जाएगा. आप इस फील्ड को मैंडेटरी करना चाहते हैं या ऑप्शनल, तो मैंडेटरी. क्या डिस्प्ले हो ऑल पीडीएफ में, यस. तो जब मैं इसे सेव करूंगा तो व्हेन आई क्रिएट अ इनवॉइस तो वहां पर ये शो करेगा. तो यू कैन कस्टमाइज योर इनवॉइस फील्ड्स ऑल्सो. अगर यहाँ पर मुझे व्हीकल नंबर देना है अपने इनवॉइस के अंदर, तो मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर भी दे सकता हूँ. यस, सीए विकास कुमार जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी ट्रांजेक्शन ऑडिट फीचर अवेलेबल इन जोहो. ट्रांजेक्शन ऑडिट फीचर जोहो बुक्स के अंदर ऑडिट से रिलेटेड एक फीचर है, ट्रांजेक्शन लॉकिंग. ट्रांजेक्शन लॉकिंग का मतलब जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आप उस पीरियड को लॉक कर सकते हैं. मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे. आप उन ट्रांजेक्शन के पीरियड को आप लॉक कर सकते हैं. अकाउंटेंट मॉड्यूल के अंदर जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन लॉकिंग. तो फर्स्ट, अगर आपकी बुक्स क्लोज हो गई या फाइनल हो गई तो आप उस पीरियड को, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को लॉक कर सकते हैं. सेल्स मॉड्यूल को लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं, और लॉक ऑल ट्रांजेक्शन एट वंस वो भी कर सकते हैं, जो कि दूसरे प्लान में अवेलेबल है. अब आपने पूछा क्वेश्चन ट्रांजेक्शन, जस्ट अ सेकंड. यस, तो पहला फीचर तो इस तरीके से. दूसरा फीचर हमारे पास ऑडिट से रिलेटेड है, इसके अंदर ऑडिट ट्रेल. आप यहाँ पर जाएंगे सबसे लास्ट में, तो आपके पास एक फीचर है ऑडिट ट्रेल का. जस्ट लेट मी चेक. यस, ऑडिट ट्रेल का फीचर अवेलेबल है जोहो बुक्स के सभी प्लान्स के अंदर. ऑडिट ट्रेल आपको पता होगा इन कंपनीज एक्ट मैंडेटरी हो गया, इवन ऑडिटर को भी अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करने, अगर कोई क्लाइंट आपका नॉन ऑडिट ट्रेल वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है. और ऑडिट ट्रेल के अंदर हमारे पास पूरी एक्टिविटी लॉग रहता है, पूरी एक्टिविटी रहती है ट्रांजेक्शन की, कि कब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, कब क्या चेंज हुआ, और ये सारी हमें रिपोर्ट्स मिलती है. कहाँ से मिलती है मैं आपको बताता हूँ. आप जाते हैं रिपोर्ट सेक्शन, और रिपोर्ट सेक्शंस में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करते हैं ऑडिट ट्रेल एंड एक्टिविटी लॉग. तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरा ऑडिट ट्रेल और ऑडिट एक्टिविटी लॉग शो हो रहे हैं.
यहाँ पर पूरा एक्टिविटी और ऑडिट ट्रेल लॉग शो हो रहा है कि कब कौन सा इनवॉइस बनाया, किसने बनाया, कब चेंज करा। तो यहाँ पर इस ऑडिट ट्रेल को क्या डिलीट किया जा सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल because it is also a mandatory requirement as per Companies Act. Even you can schedule this report and even you can download this as a export. You can export this in a PDF or Excel format. Okay. Now, next part is any other questions? Yes, I am using Zoho Inventory from July and I want to migrate from 1st April 2024. Can I do that without affecting inventory and sale from July to March 2024 as inventory and books are already integrated? वन थिंग आई टेल यू, जो जो बुक्स है, जो इन्वेंट्री है, जो पेरोल है और जो पीपल है, जो सीआरएम है, ये सब इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। अगर आप कोई डेटा एक बार गलत इंपोर्ट कर देते हैं जो बुक्स के अंदर, तो जो के अंदर स्प्लिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टेली के अंदर हम क्या करते हैं ट्रेडिशनली, अगर हमारा एक फाइनेंशियल ईयर गलत हो जाता है तो हम उस डेटा को स्प्लिट कर देते हैं और नए साल से फिर से टेली स्टार्ट कर देते हैं, वहां के क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ले आते हैं और डेटा स्प्लिट कर देते हैं। बट जो बुक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसा टैली की तरह स्प्लिट करने का फीचर नहीं है। अगर आपने कोई एरर करा है, आपके बैलेंसेस गलत आ रहे हैं, तो आपको पीछे से सारा ठीक करते हुए आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस साल में ठीक कर दें और पीछे साल अगर वो गलत है तो वो गलत रहेगा। आपको सारा पीछे से ठीक करते हुए आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मैनेज। और अगर आप जो इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं अभी जुलाई से, जुलाई पिछले साल जुलाई से, और माइग्रेट करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2024 से, तो अब आपको जुलाई से ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी सारा डाटा भी माइग्रेट करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन में सिंक कैसे बनेगा? अगर आपने कोई सेल इन्वेंट्री के अंदर हो रही है तो सेल इनवॉइस भी तो वहां पर होना चाहिए। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस पीरियड का जुलाई से ही माइग्रेट करें, नहीं तो उस पीरियड की ट्रांजेक्शन्स को हटाएं, तभी वो सिंक्रोनाइज मैनर में काम करेगा। ओके, नेक्स्ट। तो आई होप सेल्स के बारे में हमने देख लिया, परचेज के बारे में देख लिया, टाइम ट्रैकिंग के बारे में अभी बाद में आएंगे क्योंकि ये इसका मतलब फीचर है, लेकिन कोर फीचर हम कह सकते हैं नहीं है। अब इसके बाद जो इसके चीज है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, सबसे लास्ट में जहाँ पर आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस चालान, एडवांस टैक्स चालान, जो भी है वो यहाँ पर ही आप मैनेज कर सकते हैं या फोल्डर बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ बिल्स का फोल्डर बनाया और क्रेडिट कार्ड का फोल्डर आपने बना दिया, जीएसटी चालान का फोल्डर बना दिया, टीडीएस चालान का फोल्डर बना दिया, ताकि ये सारे फोल्डर्स आपको यहीं पर दिखे जितने भी आपके फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पार्ट इज जीएसटी फाइलिंग, अकाउंटेंट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं जिसको हम फेवरेट भी मार्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीएनएल यू कैन सी शेड्यूल 3 के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल पीएनएल कैश फ्लो स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टल शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ये सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ से मिलती है। सो इफ योर डेटा इज करेक्ट, इनपुट इज करेक्ट, यू विल गेट प्रॉपर रिपोर्ट्स ऑल्सो, यू विल गेट प्रॉपर रेशियोज ऑल्सो। मूवमेंट ऑफ इक्विटी, रिसीवेबल्स के बैलेंसेस की रिपोर्ट, पेमेंट रिसीव की रिपोर्ट, recurring invoices, payables, purchase, taxes, banking. So there are multiple reports, journal ledger reports, currency, activity. So यहाँ पर सारी reports available है। Even advanced financial analytics भी available है Zoho के अंदर। अगर आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है और आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके देखना चाहते हैं, हालांकि Zoho के अंदर फीचर अवेलेबल है ब्रांचेस का, यू कैन ऐड मल्टीपल ब्रांचेस इनटू दिस Zoho। मेरे यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा, बट ब्रांचेस का ऑप्शन अवेलेबल है Zoho बुक्स में, ब्रांचेस।
तो आप मल्टीपल ब्रांचेस जो बुक्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उनको आप कंसोलिडेशन बेस पे देखना चाहते हैं, तो देन यू कैन यूज जोहो एनालिटिक्स। वहां पर आप जोहो एनालिटिक्स को यूज कर सकते हैं। ओके। सो अब हम लास्ट के 10 मिनट रखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अगर आपका अभी तक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर देता हूं। और नेक्स्ट जो हम कल की सेशन में डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे के लिए, जैसे बैंकिंग के बारे में हम कुछ और बात करेंगे कि कैसे हम कनेक्टेड बैंकिंग से हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग को। जीएसटी फाइलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाउ टू सेट अप रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट। उसके लिए आपको ये मिस्टर करण का क्वेश्चन है कि कैसे हम सेटअप कर सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो उसके अंदर ऑप्शंस हैं पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने का। तो अगर आपका रेजर पे पेयर अकाउंट है तो आप उसको पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, पेटीएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है, वहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं पेमेंट गेटवे के, जब आप पेमेंट कलेक्ट करते हैं तो वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इवन आप अपने इनवॉइस के अंदर क्यूआर कोड या यूपीआई भी लगा सकते हैं। आप अपना यूपीआई जनरेट कर लीजिए, यूपीआई क्यूआर कोड, और उस यूपीआई क्यूआर कोड को अपने इनवॉइस पे अटैच कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। यस। हाउ कैन वी कंबाइन डेटा फॉर ऑफ बोथ ब्रांचेस। देखिए बोथ ब्रांचेस का डेटा कंबाइन करने के लिए जो बुक्स में आपको कुछ नहीं करना। टेली के अंदर हम क्या करते हैं, आई हैव सीन पीपल कि लोग मल्टीपल टेली मेंटेन करते हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। एक ब्रांच के लिए दूसरा टेली है, दूसरी ब्रांच के लिए दूसरा टेली है, और लास्ट में ईयर एंड पे हम उसे कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट इन जो बुक्स आप एक ही ब्रांच बनाएंगे, जब आप पीएनएल पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं वहां पर, और देख सकते हैं उस ब्रांच का कितना प्रॉफिट है, उस ब्रांच का कितना लॉस। तो ब्रांच वाइज आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। जब आप एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे व्हेन यू आर क्रिएटिंग सेल इनवॉइसेस, तो आपसे वो पूछेगा कि आप लेट से दिल्ली के अंदर करोल बाग ब्रांच से वो सेल कर रहे हैं या कनॉट प्लेस ब्रांच से सेल कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ब्रांच का ऑप्शन आएगा। तो देयर यू कैन डू, एंड व्हेन यू आर जनरेटिंग रिपोर्ट देन यू कैन क्लिक सम बटन्स एंड यू कैन सी कि कहाँ से आप उसको ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच वाइज प्रॉफिट बैलेंस शीट आप जनरेट कर सकते हैं। हाँ। सो नाउ सीए विकास कुमार जी का ऑप्शन क्वेश्चन है कि वेयर इज ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट पीएनएल ऑप्शन। सो लेट मी शो यू कि वो कहाँ पर है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। आप जाएंगे जो बुक्स में, सबसे लास्ट में रिपोर्ट्स है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3। तो यू कैन सी यहाँ पर पीएनएल दिख रहे हैं। ऊपर ऑप्शन है दिस ईयर, दिस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ। आप उस तरीके से यहाँ पर ये पीएनएल जनरेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस पीरियड से, प्रीवियस ईयर से, रिपोर्टिंग टैग लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, फिल्टर करके ब्रांचेस देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रांचेस मैंने अभी अनेबल नहीं करी, ब्रांचेस अनेबल करेंगे तो ब्रांच का भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट और few entries like salary or any other expenses of any other bank which is not linked with Zoho for ICICI Bank using some templates or something? अगर आपका बैंक डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता तो आप एक एक्सेल टेम्पलेट दिया हुआ है, उस एक्सेल टेम्पलेट से या फिर आपका कोई भी चाहे बैंक अकाउंट हो, आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा गर्ग का, इज देयर एन ऑप्शन ऑफ फॉर इंटीग्रेटिंग Amazon सेल्स इन दिस सॉफ्टवेयर? तो इसके लिए एक Amazon सेलर अकाउंट है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ ऑप्शन, Amazon सेलर पोर्टल विद Zoho बुक्स। तो Zoho इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर आप देखिए Amazon इंटीग्रेशन विद Zoho इन्वेंट्री। तो आप इसको Amazon का जो सेलर अकाउंट होता है हमारा, उसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो भी आपकी ई कॉमर्स सेल है, उसको आप उस डेटा को ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप फेच कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू करें और जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे एक बार फॉलो करें। तो दिस फीचर इज अवेलेबल इफ यू आर यूजिंग Zoho बुक्स एंड Zoho इन्वेंट्री। यस। एक क्वेश्चन है, हाउ टू, आरती का क्वेश्चन है, आरती जी का, कि हाउ टू सेट ट्रांजेक्शन रूल्स प्लीज एक्सप्लेन। तो इसको मैं अपने नेक्स्ट एजेंडा में, नेक्स्ट वाले सेशन में एक बार डिस्कस करूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्विकली कि बैंकिंग में जाके हम उस बैंक अकाउंट पे पर्टिकुलरली क्लिक करेंगे और पर्टिकुलरली क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन होता है राइट में। जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सो वी क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स और यहाँ पर ऑप्शन आता है मैनेज ट्रांजेक्शन रूल्स। तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन रूल्स को लगा सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन रूल्स लगाने का ऑप्शन, न्यू रूल, रूल का नेम, रूल आप डिपॉजिट पे लगाना चाहते हैं, विड्रॉल पे, और रूल लगाने के बाद उस ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं या कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो ये रूल्स आप लगा सकते हैं। एनी कैपेसिटी लिमिट फॉर दिस सॉफ्टवेयर, शिखाकर जी का क्वेश्चन है। कोई इस तरह की कैपेसिटी लिमिट तो नहीं है। इवन ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बिग ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग Zoho बुक्स, और आप देख सकते हैं कि Zoho बुक्स कौन कौन से किस तरह के बिजनेस ओनर यूज कर रहे हैं इसकी केस स्टडी में जाके। इवन बड़ी कंपनियां लाइक जोमेटो और दूसरी तरह की जो एमएनसीज हैं वो भी Zoho के टूल्स को, किसी कोई Zoho पेरोल, कोई Zoho एक्सपेंस, कोई Zoho पीपल, हर तरह की टूल्स यूज कर रहे हैं। तो आप इसको जाके थोड़ा सा और उनकी केस स्टडीज पे जाके आप एक बार देख सकते हैं। एज सच कोई कैपेसिटी लिमिट नहीं है, यू कैन मैनेज। कि Zoho के जो प्लान्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बने गए हैं। Zoho का जो एंटरप्राइज प्लान है, मैं यहाँ पर आपको Zoho बुक्स की प्राइसिंग शो करता हूँ एक बार। अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड प्लान, प्रोफेशनल प्लान और प्रीमियम प्लान, और यहाँ पर प्लान दैट गो बियॉन्ड बेसिक्स। तो इवन अल्टीमेट प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर एडवांस बिजनेस इंटेलिजेंट कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर आपको और एडवांस फीचर्स मिलते हैं। और अगर ये तो बेसिक प्लान है जो हमारे लिए सुटेबल होते हैं, लेकिन अगर आप एज अ एंटरप्राइज जाते हैं तो आप और ज्यादा हाई प्लान्स देख सकते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अभिषेक अनीजा का क्वेश्चन है, इफ अ क्लाइंट वांट टू मूव to a different software in later year, then what reports or data can be downloaded to keep past accounting records? अगर आपका क्लाइंट दूसरी डेटा पे शिफ्ट होना चाहता है बाद में, तो आप यहाँ से सारे सेल इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, जर्नल एंट्रीज, बैंकिंग, इन सबको एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके
दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। सृष्टि गुप्ता जी का क्वेश्चन है, जस्ट लाइक वी एडेड कस्टमर्स इन एक्सेल, कैन वी डू सेल्स एंट्री इन एक्सेल ऑल्सो? यस डेफिनेटली, मैंने आपको बताया यहाँ पर जाके सेल्स में जाके इनवॉइसेस में जाके आप बल्क में सारे इनवॉइसेस एक बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ इंपोर्ट इनवॉइसेस का ऑप्शन है, यू कैन क्लिक हियर एंड इंपोर्ट ऑल योर इनवॉइसेस इन वन शॉट। आपको बस एक टेम्पलेट है वो फॉलो करना पड़ेगा। कुछ हो सकता है फर्स्ट टाइम आप करें तो एरर आए, तो उन एरर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मिस्टर करण देवा का क्वेश्चन है, इज देयर शॉर्टकट इन जोहो लाइक टेली? यस, जोहो बुक्स में शॉर्टकट्स अवेलेबल है। आप जोहो बुक्स के शॉर्टकट्स देख सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट, तो यहाँ पर जाएंगे आप, तो यहाँ पर क्योंकि एज अकाउंटेंट कई बार शॉर्टकट्स टैली के हम फेमिलियर होते हैं, तो यहाँ पर शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इनवॉइस बनाना है, कोड्स बनाने हैं, तो ये सारे शॉर्टकट्स आप देख सकते हैं। और इवन जो बुक्स में टॉप पर आप यहाँ पर क्विक क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, ये प्लस आइकन दिया है क्विक क्रिएट करने का, तो यहाँ से आप क्विकली कुछ भी ऐड कर सकते हो, एस्टिमेट, इनवॉइस, पेमेंट रिसीव, बिल्स, कार्ड पेमेंट, ड्राइंग्स, एनीथिंग। मिस्टर शिख, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखागर जी का, इज दिस इंटीग्रेटेड टू आइस गेट और एमसी एज वेल? नहीं, अभी ये एमसीए और आइस गेट के साथ तो इंटीग्रेशन नहीं है। जीएसटी पोर्टल के साथ है आपका इंटीग्रेशन, ई इनवॉइसिंग के लिए है। आइस गेट के लिए जहां तक मैं अवेयर हूँ, या एमसीए के लिए जहां तक मैं अवेयर हूँ, उसका अभी इंटीग्रेशन नहीं। यस, और कोई क्वेश्चन आपके? इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज देयर, फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट शिखा जी आप यूज कर सकते हैं जो इन्वेंट्री, inventory management, comprehensive inventory management is not there in Zoho books. Yes, next question is CA Fahinindra ji Reddy. How can I download sale invoices in Excel format along with GST column like columnar view in Tally for audit purpose? Okay, so what you can do, you can go to Zoho Books, go to reports. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए how can I download sale invoices in Excel format along with GST column like columnar? तो देखिए आप यहाँ पर जाइए, इनवॉइस डिटेल में क्लिक कीजिए। इनवॉइस डिटेल में क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिपोर्ट पर क्लिक करिए, ऐड और हाइड कॉलम। आपको टेक्स्ट कॉलम चाहिए, आप यहाँ पर टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट अमाउंट। अगर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सीजीएसटी का, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यू कैन क्लिक हियर और अब यू कैन रन दिस रिपोर्ट। तो अब आई थिंक आपको जो शो हो रहा होगा वो कॉलमनर व्यू शो हो रहा होगा, और यहाँ पर आप फर्दर सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनवॉइस नंबर सब कुछ देख सकते हैं। फर्दर आप कुछ देखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं।
यस, जो बुक्स अगर आप यूज करते हैं जो इन्वेंट्री के साथ, तो दैट इज ऑटोमेटिकली लिंक्ड। Yes, any further questions? How to transfer payment and balances between vendor and customer? How to transfer payment and balance between vendor and customer? आपस में आप जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते कस्टमर और वेंडर के साथ, दैट इज नॉट पॉसिबल इन Zoho Books. हाउ टू एक्सपोर्ट अनरिकंसाइल्ड बैंक स्टेटमेंट इन एक्सेल? आपके पास यहाँ पर रिकंसिलिएशन का ऑप्शन आता है, तो आप रिकंसाइल कर सकते हैं डेटा को। यू गेट ऑप्शन टू रिकंसाइल। आप यहाँ Zoho Books में जाते हैं और बैंकिंग में जाते हैं, उस पर्टिकुलर बैंक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकंसाइल, रिकंसाइल अकाउंट। तो यहाँ से आप बैंक रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं। Yes, you can. This software, this look like zero software broadly, right? Yes, you can say that. Yes, रिकंसिलिएशन के बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास रिकंसिलिएशन का ऑप्शन होता है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, एंड नेक्स्ट हम जो भी है और हम इसके अंदर ऑटोमेशंस को देखेंगे। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप अपना एक जोहो का जो CMP बेनिफिट इनिशिएटिव है उसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करें और उसको खुद एक बार रन करके देखें, और ताकि फिर जो क्वेरीज आती है आपके पास वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करें। Thank you, sir. Thank you for this knowledge sharing session. It was very helpful and interesting. And all of us who participated and who questioned the speaker, you made the session quite interesting. And don't forget to join us tomorrow in the same link and same time. Thank you, sir, for being there. And Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you.